Welcome back, students. This is the session number 10 and from the chapter of electrostatic potential and capacitance, and the topic is the combination of capacitors. और आज हम लोग दो तरीके के combinations के बारे में discussion करेंगे. That is the series combination and the other one is the parallel combination. तो series combination में क्या है कि the capacitors are connected in series. और एक मैंने छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है. यहाँ पे मैंने दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है. So this is a series combination. So series combination में क्या होता है कि in the series combination one end, or we can say the one terminal of of one capacitor is connected to the one terminal of the other capacitor. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है this terminal of this capacitor, let us say this is the capacitor number 1, or you can say the capacitor C1, and this is the capacitor C2, and this C1 capacitor is having a capacitance of C1, and this capacitor that is the capacitor C2 is having a capacitance of C2. The voltage drop across this capacitor is V1, and the charge on this capacitor is Q. The voltage drop across this capacitor is V2, and the charge is on this capacitor is Q. Now in the series combination में क्या होता है कि the one terminal of one capacitor is connected to one of the terminals of the other capacitor. ठीक है, ये इस प्रकार से हमने यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है. So this terminal, that is this terminal of the capacitor C1 is connected to this terminal of the capacitor C2. तो ये दोनों connected है. This is the series combination है. Series combination में क्या होता है कि the charge on each of the capacitor is the same. ठीक है, and the potential drop across the capacitors is given by the sum of the potential drop across each capacitor. That is, if the potential difference across these two capacitors is V, then the potential difference that is V will be equal to V1 plus V2, where V1 is the potential difference across this capacitor and V2 is the potential difference across this capacitor. Now V is equal to Q by C because Q is equal to CV. ठीक है ना? And so V is equal to Q upon C है, and where C is the effective capacitance. So मैंने V की जगह पे Q upon C कर दिया, and since the charge on both these capacitor will be the same, so V1 will be equal to Q upon C1 plus V2 का की जगह पे क्या हो जाएगा Q upon C2. So यहाँ से हमको क्या मिल जाता है कि that is the effective capacitance, that 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ठीक है, so if there are n capacitors connected in series, then the equivalent capacitance will be given by, it can be written as, that is 1 by C will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus so on 1 by Cn. ठीक है, so in the series combination the potential difference across the capacitors is equal to the sum of the potential difference across each capacitor, and second thing, the charge on each capacitor is the same, and on the basis of these two these conditions we were able to find the formula for the equivalent capacitance. That is, the equivalent capacitance is given by 1 by C is equal to 1 by C1 plus C2 in this case. So if there are n capacitors which are connected in series, then it will be given by, we can write this, the equivalent capacitance will be equal to the equivalent capacitance will be equal to 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 and so on up to Cn, where n is the number of capacitors which are connected in the series. Okay, so and in this series combination, what the one terminal of one of the capacitor is connected to the
other terminal to one of the terminals of the other capacitors. यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला कैपेसिटर का ये वाला जो टर्मिनल है, this is connected to the this terminal of the capacitor C2. ठीक है, now ये तो हो गया आपका सीरीज में, and now we will just come to the second combination, that is the parallel combination. Now in the parallel combination, में आपका, आई एम जस्ट मेकिंग वन figure here. So let us say I am just making, so this is a so this is a parallel combination, and ये दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और ये हो गया C1, ये हो गया C2, and so these are the two capacitors which are connected in parallel. Parallel combination में क्या होता है कि one terminal of one of the capacitor is connected to the one terminal of another capacitor, and the other terminal of the this one of the capacitor is connected to the other terminal of the this second capacitor. ठीक है, इस कैपेसिटर का आप देखेंगे यहाँ पे कि this terminal is connected to this this terminal of this capacitor, and ये जो terminal है इसका ये this is connected to the other terminal of this capacitor. So ये आपके जो ये this is called the parallel combination. ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is the same. ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, दैट इज अगर मतलब कि अगर ये दोनों कैपेसिटर मेरे पैरेलल में है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज लेट अस से दिस इज द कैपेसिटर C1 है और ये C2 है, सो इनके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के अक्रॉस में, वो लेट अस से मैं कहता हूँ अगर इसका V है तो इसका भी V होगा. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर. ठीक है, अच्छा, नाउ सेकेंड थिंग क्या है, टोटल चार्ज of the combination say Q will be equal to Q1 plus Q2. यहाँ पे मैंने इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज लिया वो Q1 लिया हुआ है, एंड इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो लिया Q2 लिया हुआ है. So the total charge of this combination, I'm just trying to explain you the parallel combination with the help of this example in which I have taken only two capacitors. तो यहाँ पर क्या है, तो टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इस पे Q1 Q2, द टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन इन द पैरेलल अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2. सीरीज में क्या होता था कि दोनों जो मैंने चार्ज लिए थे, दो कैपेसिटर का जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया था, उसमें दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज है वो सेम था. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो दोनों कैपेसिटर के ऊपर जो है वो चार्ज डिफरेंट है.
So Q is equal to Q1 plus Q2. So now Q is equal to C into V. Now इसका अगर मैं कहता हूँ कैपेसिटेंस C1 है, उसका ये C2 है. So ये Q is equal to Q1 plus Q2. इसी इक्वेशन को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो Q की जगह पे मैं लगा देता हूँ C into V. ठीक है, where V is the potential difference across these capacitor. पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, एंड ये जो टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन Q is equal to Q1 plus Q2 and Q will be equal to C into V, where C is the equivalent capacitance of this combination and V is the potential drop. ठीक है, and this will be equal to Q1 क्या हो जाएगा, Q1 will be equal to C1 into V plus C2 into V. तो यहाँ से हमारा जो है क्या निकल के आता है, it implies that the equivalent capacitance is equal to C1 plus C2. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पैरेलल में देयर आर n कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनका जो इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस so on plus Cn, where n is the number of capacitors which are connected in parallel. सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स जो है विल बी द सेम. ये सेकेंड पॉइंट हो गया. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C1 plus C2 plus so on plus that is I have written here C1 plus C2 plus and so on up to Cn, where n is the number of capacitors. अगर 10 कैपेसिटर हैं then it will be equal to C1 plus C2 C3 and up to plus C10. ठीक है ना, अगर मतलब जितने कैपेसिटर्स हैं उन सभी का जो है इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस है वो एड अप हो जाएगा and we will be getting this effective capacitance of that combination. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो ही कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में थे, इसलिए तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C1 plus C2. और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स विल रिमेन द सेम. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज दैट द टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज है Q of the parallel combination will be equal to Q1 plus Q2 plus and so on plus Q1. So if there are n capacitors which are connected in parallel, then the total charge will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and so on up to Qn. ठीक है, so these are the three important points which we have to remember for this parallel combination. ठीक है, so this is what I just wanted to discuss in this session, and in the next session I will be coming up with another topic regarding the energy which is stored in the capacitor. So thank you very much for joining, and I hope that you have understood this lecture, and if you have any doubts, definitely you can contact me at any moment of time. So thank you very much for joining this session, and have a nice day. Bye.